Hello, hello. Good afternoon to all. Am I audible? Done. Okay. Okay. Wait a minute. Okay. Again, welcome to Nirman Institute Masterclasses. Okay, right. Audio okay. Video okay. Done. Done. तो आज आम स्टार्ट करिया जाऊँ आम चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन रा वीडियो लेक्चर 2. ऑलरेडी हम वीडियो लेक्चर 1 रे रिलेशन विषय पढ़ सारी कौन पढ़ले ना रिलेशन पढ़ले रिलेशन केमती तैयारी करछे पढ़ले रिलेशन पई कौन कौन दरकार से विषय पढ़ले जेमती हमर कार्टेशियन प्रोडक्ट विषय जानले ऑर्डर पेयर विषय जानले किसी इंपोर्टेंट रिजल्ट्स विषय देखथिले. तो आज हम देखिए वीडियो लेक्चर 2 रे रिलेशन इनवर्स ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन. ओके. तो ये जो चैप्टरटा रिलेशन एंड फंक्शन बहुत क्रिटिकल चैप्टरटा पिला को लागे बहुत दिक्कत वाली चैप्टर एटा पिला मानन पे. तो आमे को एमिति वेयर पढिबा जेमति सेकंड टाइम तुमको एटा पढला पर लागिबन जे एटा दिक्कत अछि बोली सेकंड टाइम लागिबन जे चैप्टरटा कष्ट बोली एते कॉन्सेप्चुअली एते विजुअलाइज करके आमे चैप्टरटा को पढिबा. ओके. एंड नेक्स्ट ट्राई कर सदा बेले बेसिक बेसिक क्लियर करिया पे वंस तमरो बेसिक क्लियर हैला ना देन आमे जो जो भी ट्रिक आमे यूज करिबा क्वेश्चन सॉल्विंग पे जेन तमे इजीली बुझी परिबो. ओके. तो फर्स्ट जिंस हैला तमे बेसिक क्लियर करो. फर्स्ट हम वीडियोस जा जा अछि देखो देन ए वीडियो को आसो जदि से वीडियोस न देखि जाओ. ओके. तो लेट्स स्टार्ट आज सेशन को स्टार्ट करिया एबे. चलो. तो हमें कौन कौन देखले ना इंट्रोडक्शन पढ़े ऑर्डर पेयर्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट सम यूजफुल रिजल्ट्स एंड रिलेशंस एतिक हम देख सारछि वीडियो लेक्चर 1 रे एतिक हम देखिथिले. देन एबे देखिबा रिलेशन इनवर्स ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन. तो आज क्लास रे ए तीनटा चैप्टर को हम ट्राई करिया कवर करिया पे 1 आवर आई थिंक लागिवो हम कवर करिया पे. ओके हम ट्राई करबी जल्दी सारिया पे. चलो स्टार्ट करिया आज सेशन. तो हम रिलेशंस पढ़िथिले. तो रिलेशन कोन ना रिलेशन इज द कनेक्शन बिटवीन टू सेट दीटा सेट अछि दीटा सेट भितर हम तले कनेक्शन करले तो से कोन तेरी ना रिलेशन तेरी बिटवीन टू तले कनेक्शन केमति करछे ना यूजिंग द कार्टेशियन प्रोडक्ट दीटा सेट को हम कोन करले ना कार्टेशियन प्रोडक्ट करले कार्टेशियन प्रोडक्ट कला परे हमहु बहुत सारा एलिमेंट्स मिलिबो बहुत सारा एलिमेंट्स दीटा सेट को तले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करू से हमहु गोटे सेट देला से सेट भीतर कौन होइबो ना एलिमेंट्स. तो एलिमेंट्स केमति रहंती ना यूजिंग ऑर्डर पेयर बाय ऑर्डर पेयर ही एलिमेंट्स गुडा रहंती. तो से जो सेट मिलला कार्टेशियन प्रोडक्ट परे सेही सेट हमें जेतेटा सबसेट बाहर करिबा से सबुतियो सबसेट होची गोटे गोटे रिलेशन बिटवीन दैट टू सेट. ओके. तो एडी कोन लिखा हितला हम डेफिनेशन ना अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन a connection between two sets is called a relation. दीटा सेट भितर कनेक्शन टाको हम कोन कहूचे ना रिलेशन. ए रिलेशन इज a subset of Cartesian product A and B. सपोज A and B दीटा सेट अछंती दीटा सेट को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कले हमका गोटे सेट मिलला सेही सेट रे हम जहा 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 सब सबसेट बाहर कर जितेटा सबसेट बाहर करबा से सब सबसेट गोटे गोटे कोन ना रिलेशन का ना A and B. रिलेशन फ्रॉम A to A is called a relation on A. जदि A to A रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट कले तार किसी सबसेट नेले तार रिलेशन ऑन A मु B to B कार्टेशियन प्रोडक्ट करबी तार किसी सबसेट नेबे रिलेशन ऑन B. हमें कहू से A to B दिटा अलग अलग सेट थिले बट खाली A थिले A to A रिलेशन बार करथले रिलेशन ऑन A. ओके. नेक्स्ट कोन थिला ना एनी सबसेट ऑफ A cross B is defined as a relation from set A to set B. Any subset of
any subset of A is defined as the relation from A to B. A to B ର Cartesian product जे कोनसे हम सबसेट नबा जतेटा सबसेट नबा से होची कोन ना रिलेशन where A and B as non empty set एटी गोटे इंपोर्टेंट लिखा है non empty दीटा जाक एम्प्टी हे नथिबो जदि दीटा को सेट एम्प्टी होछन कार्टेशियन प्रोडक्ट रे कोन मिलिबो ना एम्प्टी रिलेशन ये है एम्प्टी रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट रे एम्प्टी एलिमेंट्स जदि किछि एलिमेंट्स ना जदि दीटा किछि एलिमेंट्स त रिलेशन केमति हम तैयार करबे किछि रिलेशन तैयार कर परनी तो दीटा को नॉन एम्प्टी होबा पे बाध्य relation is the subset of Cartesian product R is the subset of Cartesian product relation टा कोन Cartesian product रो subset ओके तो एबे चलो कौन देखिबा इनवर्स ऑफ तो रिलेशन विषय प्रीवियस वीडियो लेक्चर हम देख सारछे एबे आसी हमर टॉपिक इनवर्स ऑफ ए रिलेशन तो रिलेशन तो जानले तो इनवर्स ऑफ ए रिलेशन कोन ना रिलेशन रो इनवर्स इज रिलेशन रो इनवर्स मींस ना रिलेशन जानले ऑर्डर पेयर हे कि थिबो x, y in orderly means first set ओके देखो एटी विजुअलाइज करो देन हमें कॉन्सेप्ट करू जो सपोज गोटे सेट नेली a that is 1 2 गोटे सेट नेली b that is a b तो गोटे कार्टेशियन प्रोडक्ट रे हमर कोन एलिमेंट्स आसीबो ना 1 a 1 b 2 a and 2 b these are the elements in our Cartesian product मु गोटे थ्रू रिलेशन बाहर कली r1 गोटे रिलेशन बाहर कली r1 तो रिलेशन मींस कोन ना ए सेट रो सबसेट्स तो कोन सबसेट नेली मु लेनी लेट गोटे सबसेट नेली 1 b and 2 a this is the relation 1 नेली तो व्हाट इज द इनवर्स ऑफ रिलेशन 1 रिलेशन 1 रे इनवर्स ताले कोन आसीबो ना एई ऑर्डर टाको हमें चेंज करिया कोन करिया ना एई ऑर्डर टाको हमें चेंज करिया तले केमति चेंज करछे ना 1 b को हमें b 1 कर 2 a को मुकली कोन a 2 बुझेला केमति चेंज xy को ऑर्डर टाको हमें चेंज करी yx करिया a b ऑर्डर को चेंज करी b a करियो दिस इज द इनवर्स रिलेशन बुझेला a b को b a करियो xy को yx कर देबा ऑर्डर पेयर को चेंज कर दो दैट इज योर इनवर्स रिलेशन तो इनवर्स रिलेशन कोन आसला लेट a b सॉरी let a be two sets and let r be relation from a set to a set b r गोटे रिलेशन जोटा सेट a रो सेट b को तैयारी the inverse of r denoted by r inverse of relation को डिनोट करछे कोथरे ना r inverse रे r power -1 inverse of r is r inverse okay is a relation from b to तो r inverse कोन relation r टा a to b को थिला relation r टा set a to set b थिला but r inverse relation कोन हबो from set b to set a बुझला relation टा a to b थिला inverse ले b to a to b टा को b to a कर दो बस एति केला हमर inverse of relation defined by r inverse is b a where a b belongs to r a b order pair टा r थिला तले inverse के रहबा ना equality b okay this is your inverse relation next कोन असला inverse of if r is a relation on set a that means कोन जानले एटी कहा का भीतर रिलेशन होइसी ना a to a on a means a to a okay relation on a then the relation r on a is defined by y x sorry the inverse r inverse is y x such that x y belongs to r is called an inverse relation on a okay xy को हमें चेंज कर xy को चेंज करके yx कर xy को चेंज करके yx कर दिस इज योर इनवर्स रिलेशन तो डोमेन ऑफ r इनवर्स इक्वल टू रेंज ऑफ r इनवर्स इक्वल टू डोमेन ऑफ r
ठीक अछि ए स्टेटमेंट आमे टिके आगु देखिबा गोटे जेटा एग्जांपल कला पर एठी अछि हम जानि परिबा जे आर इनवर्स डोमेन टा आर रेंज सहित केमति इक्वल आर इनवर्स रेंज टा आर डोमेन सहित केमति इक्वल एग्जांपल ले हम जानि तो चलो नेक्स्ट एग्जांपल कोन अछि तो देखो एठी कोन let a be the set of first 10 natural number and let r be a relation on a means a to a relation on a ए जो वर्ड लिखा है on a means हमें एटी कौन करिवा ना set a to set a relation on set a to set a भितरे relation एटी बात करै एति on a कलर टिके चेंज करछि कंडीशन है ना xy belongs to r x plus 2y equal to 10 तो ए गोटे सेट जोटा फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर ताले ए सेट की असला ना ए सेट रे हमर असला री एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 नेचुरल नंबर्स आउ कोन कंडीशन ना xy रिलेशन टा कोन दैछि ना xy सच दैट x belongs to a y belongs to a x टा भी a रो अछि y भी a रो अछि आउ कोन देला ना x plus 2y equal to 10 x plus 2y टा केते हिथिया दरकार ना 10 हिथि express the set of order pairs also determine domain and range okay फर्स्ट हमको रिलेशन बाहर करियर अछि फर्स्ट हमको कोन बाहर करियर अछि ना रिलेशन ताले रिलेशन कोन बाहर करिया हमें रिलेशन कोन जानछे relation is the subset of Cartesian product relation is the subset of Cartesian product कहा कहा भितरे ना on a means a और a set और Cartesian product रो जो सेट्स जो एलिमेंट्स आसीबे तार जो सबसेट नेबी सी होची कोन ना रिलेशन ताले हम जानले r is the subset of a cross तो ये जो रिलेशन पाइबा पई जो एलिमेंट्स पाइबा पई कोन कंडीशन अछि ना x plus 2y 10 हबार अछि कोन अछि x plus 2y 10 हबार अछि ताले कोन एलिमेंट्स हमर आसीबो ताले रिलेशन एलिमेंट्स आसीबो फर्स्ट मु y जगह रे 1 पुट कली x plus आसी y जगह रे तले 1 पुट कली x केते मिलिबो ना 8 y equal to 1 x equal to 10 minus 2 is 8 8 y equal to 2 x केते ही जीवो ना x is 2 into 2 4 10 minus 4 6 8 y equal to 3 x केते ही जीवो ना 3 into 2 6 10 minus 6 हे गेला 4 8 y equal to 4 x केते आसीबो ना 8 y equal to 4 4 into 2 8 10 minus 8 is 2 8 y equal to 5 जेतले मु y जगह रे 5 पुट करछि तले x केते आसीबो ना 0 x कोठी अछि ना a रे अछि x 0 हे परिबो की हे परिबो नै दैट मींस हमें अप टू एतिके पेयर में पहले ताले कोन आसला ना आसला 2, 4 अच्छा 8, 1 6, 2 4, 3 then 2, 4 तो दिस इज योर रिलेशन आर तो रिलेशन हमें बर्तमान पाई गले जो रिलेशन की कौन करछि ना ए कंडीशन को सैटिस्फाई करछि x plus 2y equal to 10 ए कंडीशन को कौन करला ना सैटिस्फाई करला then find the domain of r हमें कोन जानछे डोमेन रेंज order pair of first elements गुडा domain order pair of second elements गुडा range then what is the domain of r na relation ro order pairs ro first elements order pairs ro first elements are the domains तर domain क्या असला here domain is अच्छा तळु लिखि होची domain of r क्या असला ना 8 6 4 and 2 order pair ro first elements are domain कहा ना relation r ro order pair ro second elements are range then range किते असला range of r equal to 1 2 3 and 4 okay
तो डोमेन ऑफ आर पाइले रेंज ऑफ आर भी हमें पाइगली एबे दरकार डोमेन ऑफ आर इनवर्स रेंज ऑफ आर इनवर्स जदि एटा हमको आर मिलला जदि हमको सेट आर मिल गला ताले आर इनवर्स पाई परिबा कि देन योर आर इनवर्स के ना ऑर्डर पेयर को उल्टेबा ऑर्डर पेयर को उल्टे देबा देन के आसीबो ना 1,8 2,6 3,4 4,2 this is your inverse relation ताले एबे को डोमेन ऑफ आर इनवर्स केते हिजबो ना डोमेन ऑफ आर इनवर्स डोमेन ऑफ आर इनवर्स के आसिला ना डोमेन ऑफ आर इनवर्स इज first elements of the order pair 1 2 3 4 1 2 3 and 4 domain of sorry range of r inverse range के आसीबो ना ऑर्डर पेयर रो सेकंड एलिमेंट 8 6 4 2 8 6 4 and 2 ओके तो एठी हमें कौन कले ना डोमेन आउ रेंज पाइले कहार ना रिलेशन आर एंड इनवर्स रिलेशन आर इनवर्स रो तो एठी टिके हमें कंपेयर करिवा टिके ऑब्जर्व करिवा कोन ना देखो डोमेन ऑफ आर रेंज ऑफ आर इनवर्स दीटा जाक इक्वल अछि की डोमेन ऑफ आर के अछि 8642 रेंज ऑफ आर इनवर्स 8642 range of R 1 2 3 4 domain of R inverse 1 2 3 4 that means it is an domain of R ta range of R inverse sହିତ equal hela and range of R domain of R inverse sହିତ equal hela तो previous slide हम लिखा हैतला domain of R inverse equal to range of R inverse equal to domain of R तो बुझिला ए स्टेटमेंट कोन पे लिखे बुझेला तो हमें कोन जानले डोमेन ऑफ आर इनवर्स ता रेंज ऑफ आर सहित इक्वल हबो रेंज ऑफ आर इनवर्स ता डोमेन ऑफ आर सहित कोन हबो ना ऑलवेज इक्वल let a equal to 1 2 3 4 5 6 define a relation r on set a by r equal to x comma y such that y equal to x plus 1 this relation using the arrow diagram ठीक है arrow diagram यूज करके हमें कौन करियो ए रिलेशन को डिफाइन कर ओके देखो तो केमती करबा ना फर्स्ट रिलेशन ऑन ए दिस रिलेशन आर ऑन सेट ए दैट मींस a to a set को डिफाइन दैट मींस सेट a to set a को डिफाइन ओके दिस इज योर सेट a using arrow diagram okay diagram जेटा बनौची this is your this is one set this is the another set okay okay चलो क्या हो रहा है okay it is okay okay then asla kono relation a to a को हम डिफाइन करिवे a to a relation define करे a to a रे की अछंदी 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 and 6 a रे की अछंदी 1 2 3 4 5 and 6 तो हमर कंडीशन कोन देसी ना y equal to x plus 1 this is your x this is your y equal to केते हबो ना x plus 1 x plus 1 तो x2 y के जीवो तो 1 एटी के असले केते हे जो जतले x इक्वल टू 1 y केते हे ना 2 तो 1 का सहित रिलेट करला ना 2 सहित दल x जगह 2 पुट करे y केते हे जो ना y इज 3 तो 1 रिलेट करला 3 सहित दल x जगह 3 पुट करे y केते हे जो ना 4 x जगह 4 पुट करले y केते हे जो ना 5 x जगह 5 पुट करले y केते हे जो ना 6 ओके आरो डायग्राम पाई गेला में
y equal to x plus 1 x जगह हम वैल्यू पुट करले हमको ये y ର वैल्यू मिलला हम को एमती लिख परिबो एटा x, y this is your x, this is your y. Okay, this is our arrow diagram representation between two sets. Write down the domain, codomain and range of R. तो ये जो रिलेशन हमें पाइले ये जो रिलेशन R पाइले हमें तो ये रिलेशन रो डोमेन कोडोमेन रेंज तीन टा दरकार तो डोमेन कोन डोमेन होची x एक्सिस डोमेन होची x रो फर्स्ट सेट रो जो एलिमेंट्स हम यूज करछे डोमेन ने कोन आसीबो ना डोमेन होची डोमेन के ना डोमेन होची फर्स्ट सेट रो जो जो एलिमेंट हम यूज करछे कौन एलिमेंट्स हम यूज करछे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 एंड 5 डोमेन ऑफ रिलेशन आर रो जो जो एलिमेंट्स हम यूज करछे फर्स्ट सेट रे सेला कोन तमरो डोमेन देन असला कोडोमेन कोडोमेन कोटा ना कोडोमेन इज द सेकंड सेट कोडोमेन इज द सेकंड सेट रो एलिमेंट्स सेकंड सेट एलिमेंट के अछि ना 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 and 6 this is your कोडोमेन तो कोडोमेन कोटे जानो ना सेकंड सेट रो जहा जहा सब एलिमेंट्स अछंती सेकंड सेट रो जहा जहा सब एलिमेंट्स अछंती दिस आर द कोडोमेन्स देन असला कोना ना रेंज तो रेंज के तो रेंज होची ना सेकंड सेट मींस कोडोमेन रो जो जो एलिमेंट हम यूज करिचे कोडोमेन रे जो जो एलिमेंट हम यूज करिचे से होची रेंज ताले कोन एलिमेंट यूज करचे 2 3 4 5 6 हम यूज करचे 2 3 4 5 and 6 रेंज मींस कोडोमेन रे हम जो जो एलिमेंट यूज होला दिस आर द रेंज तो बुझेला बे रिलेशन रो डोमेन कोडोमेन एंड रेंज ये ला तीनटा क्वेश्चन जोटा कि इंपोर्टेंट फाइंड द डोमेन कोडोमेन एंड range of a relation this is an important question for your board exam also for G exam okay this shows a relation R between the set P and Q what is its domain and range तो क्वेश्चन होछि कोन तो ए जो दीटा सेट दिला P and Q this is the set P and this is the set Q P and Q सेट जो रिलेशन एठी हेछि तो एठी डोमेन केते और रेंज केते डोमेन कोन कहले ना फर्स्ट सेट रो जेति एलिमेंट्स हम यूज करछे फर्स्ट सेट रो जो जो एलिमेंट्स हम यूज कोन ना 9 यूज हेछि 4 यूज हेछि 25 यूज मींस याको रिलेट कर हेछि पर सहित फर्स्ट सेट जो जो एलिमेंट सेकंड सेट सहित रिलेशन रे अछंती से एलिमेंट्स को हम कोन बा ना डोमेन ने देन डोमेन ऑफ केते असला डोमेन ऑफ आर डोमेन 9 4 and 25 9 4 and 25 and range बोले कौन कहले ना सेकंड सेट रो को डोमेन रो जो जो एलिमेंट्स का हम यूज करछे सेकंड सेट बा को डोमेन रे जो जो एलिमेंट्स का हम यूज करछे यूज हेछि से असला कोन हमरो ना रेंज तो रेंज है ताले के असला एलिमेंट्स ना 5 3 2 5 3 2 -2 -3 5 -2 -3 and -5 these are the range of the relation R from P to Q okay let R be a relation on Q defined by R equal to A comma B such that AB belongs to Q and A minus B belongs to Z okay so that A comma let R be a relation on Q R be a relation on Q R be a relation on Q means Q कार्टेशियन Q रो जते सारा एलिमेंट्स आसीबो से एलिमेंट्स रो सॉरी जते सारा एलिमेंट्स आसीबो भितरे
से एलिमेंट्स भितर जो एलिमेंट ए कंडीशन को सैटिस्फाई कले जो एलिमेंट्स ए कंडीशन को सैटिस्फाई करिवे सी होची हमर रिलेशन भितर आसे ऑन क्यू मींस क्यू कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यू आसले बहुत सारा एलिमेंट्स सी बहुत सारा ऑर्डर पेयर्स एलिमेंट्स मींस ऑर्डर पेयर्स से ऑर्डर पेयर भितर जो ऑर्डर पेयर ए कंडीशन को सैटिस्फाई करिवो से ऑर्डर पेयर ता हमर कोड आसीबो ना रिलेशन आर रे आसी ताले को ऑर्डर पेयर सैटिस्फाई करिवे a minus b belongs to z तो देखो दिस इज a minus b belongs to z means a minus b हमर कोन हिथो दरकार ना इंटीजर हिथो दरकार ओके ता मींस को टाइप रो थिबो ना सपोज मु नेली गोटे q मींस रैशनल नंबर एनी रैशनल नंबर जेटा नबा 1/2 minus 1/2 1/2 a and b दीटा ऑर्डर पे गोटे ऑर्डर पेयर नेली a and b जोटे a हेलो 1/2 b हेलो 1/2 ए कंडीशन सैटिस्फाई करछि कि 1/2 minus 1/2 equal to 0 belongs to z satisfy करछि that means this is in our relation r आ गोटे एग्जांपल नउछि 3 and 5 3 belongs to rational number 5 also belongs to rational number and 3 minus 5 equal to -2 belongs to integer z ये भी belongs कला that is also in our relation r out relation होची 2/3 1/2 1/3 1/2 1/3 तो ये 1/2 minus 1/3 केते होची ना 1/2 minus 1/3 होची 3 minus 2 1/6 ये belongs to z होची कि इंटीजर बनुची कि ना बनू नाही दिस इज नॉट बिलोंग्स टू z तो ये हमर रिलेशन ने आसीबो नाही ठीक अछि तो फर्स्ट कोन दिला हमको so that a belongs to r a belongs to r bit 1 a कोन अछि ना रिलेशन भितर अछि जदि रिलेशन भितर अछि ताहले ए कंडीशन को सैटिस्फाई करिवो फॉर ऑल फर्स्ट ले कोन ना ए बी क्यू रे थिबे आ ए माइनस बी इंटीजर होछि तो ए क्यू रे अछंदी कि ए क्यू रे अछि ठीक अछि ए बिलोंग्स टू क्यू अछि a minus z होछि कि a minus a equal to 0 belongs to z satisfy करूछि that means this is true that means this is true okay next कोन दिला सेकंड बिट रे अच्छा सो दैट दिस हम देखेबा जे एटा हबो बोली ओके हम गोटे देखेबार अछि जे ए कंडीशन सैटिस्फाई करियो बोली तो सैटिस्फाई कला a minus a 0 होला that is belongs to z that means it belongs to a belongs to r हबो a एटा रिलेशन r भितरे रहियो सेकंड कोन जदी a b belongs to r that implies b a belongs to r हो a b दीटा एलिमेंट जदी से रिलेशन r भितरे अछंदी ताले b एलिमेंट भी r भितरे रहिबो तो देखिया केमति होची ना कोन देला ना a b r भितरे अछंदी ए बी का भितर अछंदी आर भितर जदी ए बी आर भितर अछन माने ए बी क्यू से रे बिलोंग्स करछि ए बी बिलोंग्स टू क्यू हेथिवा दरकार दे ओके ए बी बिलोंग्स टू क्यू देछि से ए बी कोन देछि ना क्यू रे बिलोंग्स कर आउ कोन ना ए माइनस बी जेड हेथिवो ए माइनस बी बी बिलोंग्स टू जेड अछि एठी ने दे देछि एटा बिलोंग्स करूछि बोली ताहले हम शो करबा जे एटा भी बिलोंग्स करिवो जदी a माइनस b z बिलोंग्स करछन दीटा एलिमेंट्स जदी तांको डिफरेंस गोटे इंटीजर नंबर आछि दीटा एलिमेंट्स रो डिफरेंस गोटे इंटीजर नंबर आछि जदी मते नेगेटिव मल्टीप्लाई कर देली a माइनस b टा b माइनस a ही जो a माइनस b टा b माइनस ही जो तो जो इंटीजर आछिबो से नेगेटिव मल्टीप्लाई ही जो तो से नेगेटिव मल्टीप्लाई पर भी तो गोटे इंटीजर ही रहिबो
that means B minus A also belongs to Z. जदि A minus B Z रे रोची then B minus A भी Z रे रहिबो तो एठी कोन जानले जदि B minus A Z रे रोची that implies B comma A also belongs to relation R ताले कोन ना B comma A ऑर्डर पेयर टा एलिमेंट टा हमर कोन रिलेशन R भितर आसी थर्ड बिट रे कोन आसला ना थर्ड बिट रे आसला ओके थर्ड बिट रे कोन आसला थर्ड बिट रे कोन आसला जदि A, B belongs to R, A, B R भितर अछंती, B, C R भितर अछंती, that implies A, C R भितर रही A, B A और B relation R भितर अछंती, that means A minus B belongs to integer Z. B, C belongs to R, B, C B relation R भितर अछंती, that implies B minus C also belongs to integer Z. First कोन देला ना A, B belongs to R ताले हमें कोन जानले ना ये A minus B टा Z रे belong करूछन दरकार A minus B टा निहाती Z रे belong कर नेक्स्ट कोन देला ना B, C belongs to R that implies B minus C also belongs to Z B minus C भी कोन करिवो ना Z रे belong करिवो ताले बे को जदि A minus C Z रे बिलोंग करछि B minus C भी Z रे बिलोंग करछि हमहु देखे रहछि जे A minus C भी Z रे बिलोंग करिवो हम कोन देखे रहछि A minus C Z रे बिलोंग करिवो तो A minus C Z रे बिलोंग करिवो तो मु एदिटा बर्तन ऐड कर दोछि A minus B plus B minus C मींस ये गोटे इंटीजर ये भी गोटे इंटीजर जेतेले मु दीटा इंटीजर को ऐड करछि जेतेले मु दीटा इंटीजर को ऐड करछि दीटा इंटीजर को ऐड करला पर गोटे इंटीजर ही मिलिबो that implies A minus B plus B minus C also belongs to Z. A minus B plus B minus C also belongs to Z. That implies A minus C belongs to किते आसीबो ना Z आसीबो जदि A minus C Z आसला जदि A minus C Z आसे ताले AC belongs to R that implies A comma C belongs to के आसला ना रिलेशन R आसला तो बिट 1 ने कोन थले ना A, A R रे रहिबो हमें देखिले A, A R रे रहबो यानी से कंडीशन को सैटिस्फाई कर जदि A, B R अछि ताहले B, A B R रहबो जदि जदि A, B रिलेशन R भितर अछंती ताहले से कंडीशन सैटिस्फाई करले A minus B that implies B minus A also an integer तो B, A भी कोन रिलेशन R भितर थर्ड टा कोन थला ना A, B belongs to R B, C belongs to R तो A, B means A minus B integer B, C means B minus C भी integer मुझे दीटा integer को ऐड करली देन आसला A minus C भी गुटे integer हिला जदि A minus C integer होउची ताले A, C also belongs to relation R ताले A, C टा कोन हला हम relation R भितरे आसला ओके नेक्स्ट आसला कोन let number of elements in A equal to M number of elements in B equal to N A भितरे M टा एलिमेंट अछंती B भितरे N टा एलिमेंट अछंती then total number of non-empty relations total number of non-empty relations हमको non-empty relation बाहर करे अछि can be defined from A to B A to B को डिफाइन होथुओ आ नॉन एम्प्टी रिलेशन होथुओ फर्स्ट क्वेश्चन हैला जदि मु A को हमको रिलेशन बाहर करियर अछि नॉन एम्प्टी ताल फर्स्ट हमको कोन करियर अछि ना कार्टेशियन प्रोडक्ट बाहर करियर अछि ताले हमको A कार्टेशियन प्रोडक्ट B रे नंबर ऑफ एलिमेंट्स केते ना नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B number of elements in A is M and number of elements in B is N टोटल हमरा mn टा एलिमेंट अछंती कोचे ना कार्टेशियन प्रोडक्ट A plus B हमको रिलेशन दरकार रिलेशन कोन कहिसले
ना कार्टेशियन प्रोडक्ट रे जो एलिमेंट्स आसीबा तार सबसेट कार्टेशियन प्रोडक्ट रे जेतेटा एलिमेंट्स आसीबा तार सबसेट टा होची रिलेशन ताले नंबर ऑफ सबसेट्स केते आसीबो ना नंबर ऑफ सबसेट्स इक्वल टू 2 to the power n 2 to the power mn कहार नंबर ऑफ सबसेट ना नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अच्छा एमती लिखबा number of subset of n a Cartesian product number of elements in a Cartesian product b कहते हैं ना 2 to the power mn or we can write also number of relations on relation of number of relation from a to b that is 2 to the power mn number of relation पाइले number of subset भी पाई गले Cartesian but question is number of non empty relation means non empty subsets I mean phi is the subset of every set that means a subset रे phi अछि phi is the empty subset but हमको non empty subset दरकार ताले से गोटे एलिमेंट माइनस करियो पड़ियो ए टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स रो गोटे सबसेट माइनस हो के ना phi because phi is the subset of every set तो हमें ए बेजा दियो बाहर करबा non empty relation मुझे बाहर करबी non empty relation number of non empty relation from a to b केते ना गोटे एलिमेंट हमर कोन हो ना माइनस हो के ना phi तो 2 to the power mn minus 1 2 to the power mn minus 1 that is our option d okay number of non empty देखो number of subsets ले phi को हमें माइनस करछन माने नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट सॉरी प्रॉपर सबसेट रे कोन आसीबा ना इक्वल हबोनी बट नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कोन करछले ना 2 टू द पावर n - 1 गोटे एलिमेंट माइनस करथले सेमति नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन रे हमें गोटे एलिमेंट को कोन करिया ना माइनस करे के ना फाइ सेट फाइ एलिमेंट को माइनस करे कोथरु ना सबसेट रो नेक्स्ट कोन आसला a equal to 1 2 3 4 5 6 define a relation r on set a by r equal to x comma y such that y equal to x plus 1 y equal to x plus 1 दीजिए डोमेन कोडोमेन एंड रेंज पचासी कुछ ए प्रीवियस टाइम कले आई थिंक ओके देखो आउ थरे बनै देबा किछ नै तो कोन आसला ये हमरो डायग्राम ये आसला हमरो सेट दीटा सेट पड़े आसला तबे कोन करबा बे दीटा सेट रे एलिमेंट्स एंटर करबा फर्स्ट सेट येला x येला y तो कौन अछंदी a भितरे x का भितरे अछि ना x भी a भितरे अछि y भी a भितरे अछि काहे कि ना रिलेशन ऑन सेट a रिलेशन ऑन सेट a ओके ताले एरे की x का x रे कौन छियो ना 1 2 1 2 3 4 5 and 6 1 2 3 4 5 and 6 तो ये रिलेशन डिफाइन करबा y केते हिचबा ना x plus 1 y केते हिचबा x plus 1 that means 1 गला 2 पाखु x plus 1 2 गला 3 पाखु x plus 1 3 गला 4 पाखु x plus 1 4 गला 5 पाखु x plus 1 5 गला 6 पाखु 6 plus 1 7 अछि कि नहीं तो ये हमरो आरो डायग्राम रिप्रेजेंट हे गला कहां ना दीटा सेट भितरे एबे देखो कोन पचाची आरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन आरो डायग्राम रे रिप्रेजेंट कर देले राइट डाउन द डोमेन कोडोमेन एंड रेंज डोमेन कोन जानले हमें ना डोमेन जानले डोमेन विषय हमें कोन जानले ना डोमेन के ना फर्स्ट सेट रो एलिमेंट्स जोड़ा हमें यूज करले तो फर्स्ट सेट रो को एलिमेंट्स यूज करले ना 1 2 3 4 5 तो डोमेन भितर आसला 1 2 3 4 and 5 दिस इज आवर डोमेन
कोडोमेन के आसीबो ना कोडोमेन कोडोमेन के आसीबो ना कोडोमेन रे सेकंड सेट रो एलिमेंट्स कोडोमेन के आसीबो सेकंड सेट रो एलिमेंट्स सेकंड सेट एलिमेंट्स के ना 1 2 3 4 5 एंड 6 सब द एलिमेंट्स कोडोमेन देन असले के ना रेंज तो रेंज के ना रेंज हुची सेकंड सेट रो जो जो एलिमेंट्स का हमें यूज करते सेकंड सेट मींस कोडोमेन रो जो जो एलिमेंट्स यूज है की यूज है ना 2 3 4 5 and 6 this is your range 2 3 4 5 and 6 this is your range okay next कोन आसला A देछि 1 2 3 5 B देछि 4 6 9 define a relation R गोटे रिलेशन डिफाइन करबा R from A to B कोड कोड डिफाइन करबा ना A to B को डिफाइन करबा बाय कोन कंडीशन कोड कंडीशन रे ना R is the difference between X and Y is or X belongs to A and Y belongs to B एटा होछ हमर कंडीशन जो कंडीशन बा जो कांसेप्ट यूज करी कि हमें कोन करते दीटा भीतर रिलेशन फाइंड आउट करछ कोन ना द डिफरेंस बिटवीन X and Y is odd X और Y भीतर डिफरेंस कोन छै दरकार ना ऑड हे छै दरकार X कोथरे थिबो ना A रे थिबो Y थिबो B रे अब देखो कौन कौन आसीबो ना फर्स्ट हम एक फर्स्ट हैला हमको रिलेशन फाइंड आउट करे मींस दिस इज द सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ताले फर्स्ट हमको ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी रो एलिमेंट्स दरकार ए कार्टेशियन प्रोडक्ट रो एलिमेंट्स के आसीबे ना 1 4 1 6 1 9 similarly 2 4 2 6 and 2 9 3 4 3 6 and 3 9 then 5 4 5 6 and 5 9 तो आसीगले कार्टेशियन प्रोडक्ट हमो मिली गला ए कार्टेशियन प्रोडक्ट भीतर हम रिलेशन बाहर करी ए कार्टेशियन प्रोडक्ट रो सबसेट्स बाहर करबा केमती सबसेट न बा ना डिफरेंस बिटवीन x and y is odd डिफरेंस बिटवीन x and y is odd 1 and 4 भीतर डिफरेंस तो आबे रिलेशन डिफाइन करे रिलेशन के आसीबो ना 1 and 4 भीतर डिफरेंस केते आसी ना 3 odd की odd ताली ये हला हमरो ओटा ऑर्डर पे मिलला 1 6 भीतर रिलेशन केते आसी ना 5 odd की हां odd तो 1 6 हमरो रिलेशन भीतर रहला 1 9 नो डिफरेंस केते ना 8 odd की नहीं 2 4 डिफरेंस केते ना 4 2 odd की ना 2 6 रो डिफरेंस 4 odd ने 2 9 रो डिफरेंस odd असला 2 9 3 4 रो डिफरेंस 1 odd असला 3 4 3 6 रो डिफरेंस 3 odd असला तो असला 3 6 3 9 रो डिफरेंस 6 not odd 5 4 रो डिफरेंस 1 odd असला 5 4 5 6 रो डिफरेंस 1 this is also odd 5 9 रो डिफरेंस 4 this is not odd तो एतिकी सेट एलिमेंट्स मिलले जो एलिमेंट्स कोन नाम कंडीशन को सैटिस्फाई करले कोन ना डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज odd तो हमें जो पेयर मिलले xy पेयर xy पेयर xy पेयर जेतो पेयर xy पेयर मिलची तार डिफरेंस कोन ना ना ए ऑर्डर पेयर रो डिफरेंस हमको कोन मिलले ना ऑड मिलले जेतु ए ऑर्डर पेयर रो डिफरेंस ऑड मिलला तो ताको हमें को भीतर रखले ना रिलेशन भीतर रखले ओके रोस्टर फॉर्म तो रोस्टर फॉर्म लिखले रोस्टर फॉर्म बोले टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट को हमें केमती रिप्रेजेंट करते तार गोटे पार्ट थला रोस्टर फॉर्म तो रोस्टर फॉर्म में हमें कोन करले सेट को रिप्रेजेंट करले नेक्स्ट कोन आसला ओके मो नेक्स्ट स्लाइड ओपन करछि तो एबे नेक्स्ट आसला फंक्शन तो रिलेशन विषय जानले रिलेशन कोन जानले ना रिलेशन इज द कनेक्शन बिटवीन टू सेट दीटा सेट भीतर तो कनेक्शन करिए जानले
कार्टेशियन प्रोडक्ट करिया जान देले कार्टेशियन प्रोडक्ट रो सबसेट नै कि रिलेशन बाहर करि जानले बट ए फंक्शन विषय जानिबा जे रिलेशन को हमें फंक्शन कहबा केते बेले तो रिलेशन को हमें फंक्शन कहबा केते देखो किछि किछि कंडीशंस अछि हम पाखरे दुईटा कंडीशन अछि जदि रिलेशन एई दुईटा कंडीशन को सैटिस्फाई कला जदि गोटे रिलेशन टे एई दुईटा कंडीशन को सैटिस्फाई कला ताले से रिलेशन को हमें फंक्शन कहबा ताले देखो कोन अछि ना ए रिलेशन आर फ्रॉम ए सेट A to B is called function a relation R from set A to B is called function तो हमें function सेते बेले कहबा every element of set A has an image in B every element of set A रो प्रत्येक एलिमेंट every element of set A रो प्रत्येक एलिमेंट रो कोन थो ना इमेज थिबो कोठी ना B सेट A रो प्रत्येक एलिमेंट रो इमेज कोठी थिबो ना सेट B सेट रे कोन थिबो तार इमेज थिबो जदि B सेट तार इमेज थिबो इमेज कोन बतन क्वेश्चन आसले इमेज कोन देखिबा आगो देखिबा इमेज कोन कोन ना एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज इमेज इन सेट येला कंडीशन नंबर 1 कंडीशन नंबर 2 कोन ना नो एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज मोर देन वन इमेज इन सेट बी नो एलिमेंट ऑफ सेट ए रो कोनोसी एलिमेंट रो मोर देन वन इमेज नथिबो सेट ए रो फर्स्ट सेट रो कोनोसी इमेज रो मोर देन वन इमेज नथिबो बोली देखि तो दिस इज द two conditions these are the two condition एई दिटा कंडीशन जदि सैटिस्फाई करला जदि एई दिटा कंडीशन सैटिस्फाई करला ताले हमें कोन कहबा ना A to B जो रिलेशन को डिफाइन A to B जो रिलेशन ता डिफाइन हिची से रिलेशन का हमें कोन कहबा ना फंक्शन तो देखो गोटे एग्जांपल देखो ओके बट गोटे एग्जांपल देखो ए एग्जांपल ले तुम जानि परिए ए रिलेशन होउची कि नै फंक्शन होउची कि नै कोन देला ए गोटे सेट देला B गोटे सेट देला f1 f3 b3 सबसेट ऑफ a कार्टेशियन प्रोडक्ट B has given अच्छा ए फंक्शन 1 फंक्शन 2 एंड फंक्शन 3 फंक्शन को हमें f रे डिनोट करछे तो देला ये जो फर्स्ट फंक्शन टा ये जो फर्स्ट फंक्शन टा ये फंक्शन हबो ना नै तो देखो आगो फंक्शन कहबानी भाव जे फर्स्ट रिलेशन एई जो रिलेशन टा फंक्शन हबो ना नै हम चेक करियो मु ताको कोन करछि तुमको डायग्राम कली रिप्रेजेंट करछि जोटा कि तुम बुझिया पे इजी हो डायग्राम रे बुझिया पे कोन हो ना इजी हो देखो डायग्राम रे केमते हम रिप्रेजेंट केमते बुझिया हमें ना ये हला तुमरो सेट ए दिस इज योर सेट बी ओके दीटा सेट हमर सेट ए रे की अछंती 1 2 एंड 3 ए सेट रे तीनटा एलिमेंट अछंती 1 2 एंड 3 बी सेट रे की अछंती 2 3 एंड 4 2 3 एंड 4 ओके तो फर्स्ट हला 1 2 1 का सहित कनेक्ट हेकी अछि 2 सहित 1 कनेक्ट हेकी अछि 2 सहित 2 कनेक्ट हेकी अछि 3 सहित 2 कनेक्ट हेकी अछि 3 सहित 3 कनेक्ट हेकी अछि 4 सहित 3 कनेक्ट हेकी अछि 4 सहित तो दिस इज आवर रिलेशन तो रिलेशन तो मिल गला एबे देखियो एटा फंक्शन हबो की तो फंक्शन पे हमर कोन कंडीशन थिला every element of set A has an image in set B every element of set A has an image in set B ताले A1 रो इमेज केते ना 2 2 रो इमेज केते ना 3 3 रो इमेज केते ना 4 these are the images of the elements first set रो each element रो इमेज कोठी ना सेकंड सेट हम मिलुची तो कंडीशन रो फर्स्ट कंडीशन सैटिस्फाई करला सबु एलिमेंट रो कोन मिलला ना इमेज मिली गला ओके सेकंड रे कोन थिला नो एलिमेंट ऑफ A has more than one image in set B कोनोसी एलिमेंट फर्स्ट सेट रो कोनोसी एलिमेंट रो गोटे रु अधिक इमेज रहिबनी तो आर केतरा इमेज अछि गोटे आर केतरा इमेज अछि गोटे आर केतरा इमेज अछि गोटे तो सब दिगर गोटे गोटे इमेज अछि दैट मींस सेकंड कंडीशन को भी कोन करला ना सैटिस्फाई करला दैट मींस दिस इज ए फंक्शन हमें कोन ले एटा होछि गोटे कोन ना फंक्शन हैला तो ए रिलेशन रो हमें कोन कहले ना ओडी गोटे फंक्शन देखो 1 2 3
1 ର 2 ଅଛି, 2 ର 3 ଅଛି, 3 ର 4 ଅଛି, means 1 2 3 ତିନିଟା ଯାକ ୟୁଜ ହେଲା ଆଉ ତିନିଟା ଯାକର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହିଁ କଣ ମିଳିଲା ଇମେଜ ମିଳିଲା दैट मींस ତମେ ଏଇଠି ଦେଖିକି ବି ଜାଣି ପାରିବ ଏଟା ଫंक्शन ହବ। सेकेंड फंक्शन गला 1 2 1 3 2 3 3 4 1 रो फास्ट ला कोन सबतिकर इमेज थिबा दरकार 1 रे इमेज अछि 1 रे इमेज अछि 2 रे इमेज अछि 3 रे भी इमेज अछि तो 1 2 3 तीन जाकर इमेज अछि मोर नॉट मोर देन 1 इमेज एक रो अधिक इमेज दरकार नहीं बट 1 रो गोटे रिले इमेज असला 2 1 ना गोटे इमेज असला 3 ताले 1 रो तो 3 दीटा इमेज असला ताले एटा तो रिलेशन को ए रिलेशन को हम कोन फंक्शन कहि परिबा नाही काहे कि देखो 1 टा 2 सहित होउची 1 टा 3 सहित भी होउची 1 टा 3 सहित भी होउची 2 3 एंड 3 4 तो एटा कोन हला ना ए जो रिलेशन एबे हमें पाइले दिस रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन काहे कि ना ए जो कंडीशन हमर देखो कोन नो एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज मोर देन वन इमेज इन सेट कौन से एलिमेंट रो मोर देन वन इमेज रहिया कथा न बट एठी वन रो दीटा इमेज असला जेतु जेतु एटा दुईटा लैंग्वेज अछि सॉरी दुईटा इमेज अछि तो एटा कोन हला ए रिलेशन का में फंक्शन कहि परले ओडिया दिस इज द ओडिया लैंग्वेज फ्रॉम ओडिशा ओके तो एठी जेतु दुईटा एठी जेतु दुईटा हम इमेज पहले दिस इज नॉट ए फंक्शन दिस इज नॉट ए फंक्शन okay okay sure why not I can speak English but maximum students are in Odia here so I can speak in both Odia and English mix so F3 next I try to speak English max to max max to max words I try to speak in English okay तो F3 function 3 में क्या है तो function 3 कौन सी ना F3 is 1 3 2 4 F3 is 1 3 and 2 4 तो okay function 3 is 1 3 and 2 4 तो 1 किसके तो 1 रो इमेज के ना 1 रो इमेज इज 3 2 रो इमेज के ना 2 रो इमेज इज 4 तो 1 का सहित कनेक्ट हेक अछि ना 3 सहित कनेक्ट हेक अछि 2 का सहित कनेक्ट हेक अछि 2 4 सहित कनेक्ट हेक अछि दिस इज आवर रिलेशन but according to our definition every element of A has an image in set B every element of A has image in set B but here the element 3 has no image element 3 has no image in set B that means it contract our definition 1 this is contract our first condition so this relation is not a function this is not a function okay because this contradict our first condition that every element of set A has an image in set B okay next A comma B belongs to F then B is called the image of A under F A comma B belongs to F then B is called the image of A under F the element in B set, the element 3 is the image of the element 1. The element 3 is the image of the element 1. The element 4 is the image of the element 2. But the element 2 has no, but the element 3 has no image in set B. The element 3 has no image in set B. We can also tell like this the element 3
3 has pre-image is 1. The element 4 has pre-image is 2, but the element 2 has no pre-image. The element 2 has no pre-image. Okay. Also, you can write if A comma B belongs to F, then A is called pre-image of B under F. Okay. A is the pre-image of B. A is the pre-image of B. Here B is the image of A. This is the image, this is the pre-image. Okay. So next, let A equal to 1, 2, 3 and B equal to A, B, C, D be two set, and let F1, F2, F3, F4 be rules associating elements of set A to elements of set B as so in the figure 1 to 4. Okay. This is your F1, this is your function 1, this is your F1, this is your let F2, this is your F2 function, this is your F3, this is your F4. These are the 4 relations. Question is, tell me which relation is a function. Question is, which relation is a function? So we have two conditions. We can say if that two conditions satisfy a relation, that relation is called function. According to our first condition, every element of set A has an image in set B. Every element of set A has an image. Sir, I have little problem in domain of real function. Okay, अभी मैंने तो रियल फंक्शन तक गया नहीं है, अभी फंक्शन के बारे में चल रहा है. आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर में हम फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, तब हम उसका डोमेन, रेंज, कोडोमेन सबके बारे में डिस्कशन करेंगे. ठीक है. ओके. ये अभी फंक्शन चल रहा है. ठीक है. तो अभी कौन देखो ना फंक्शन f1, तो ये जो रिलेशन टाको हमें फंक्शन कहबे कि नहीं हमें देखिए. तो फंक्शन कहबे कि नहीं ना एठी 1 2 3 4 1 2 3 4. अच्छा 1 2 3 एंड 4. 1 2 3 एंड 4. बी में क्या है ए बी सी डी. बी में ए बी सी डी. ओके डन. तो अकॉर्डिंग टू आवर कंडीशन एवरी एलिमेंट ऑफ से हैज एन इमेज इन बी. एवरी एलिमेंट ऑफ सेट हैज एन इमेज इन बी. 1 का इमेज बी, 2 का इमेज डी, but 3 has no image. 3 has no image here. So this is not a function. This is not a function. This is only a relation. Next, इधर क्या हो रहा है? 1 का इमेज इज A, 2 का इमेज इज B, 3 का इमेज इज C, but 4 has no image. 4 has no image. So this is not a function. This is not a function. And according to our second condition, 3 has more than one images. 3 has more than one image. So that's why this is also not a function. Okay. But in 3, figure 3, A has images, 1 has image A, 2 has image B, 3 has image B, 4 has image D. All elements A has image in B. Condition, first condition satisfied. Second condition क्या है? No elements of A has more than 2 elements. 1 का एक ही इमेज है, 2 का एक ही इमेज है, 3 का एक ही इमेज है, 4 का एक ही इमेज है, तो सबका एक एक ही इमेज है. तो दिस इज satisfied those two conditions. That means this relation is a function. Okay. फिगर 4 में क्या आ रहा है ना 1 का इमेज इज बी, 2 का इमेज इज सी, 3 का इमेज डी, 4 का इमेज ई. Every elements of A has image in B. Condition 1 satisfied. According to condition 2, no image of A has more than no elements of A has
मोर देन वन इमेजेस तो वन रो गोटे एलिमेंट अछि गोटे इमेज दुई रो भी गोटे इमेज थ्री रो भी गोटे इमेज फोर रो भी गोटे इमेज तो दिस इज आल्सो सैटिस्फाई कंडीशन 2 that means this is also our function okay figure 1 and 2 not functions only relation but figure 3 and 4 relations also function okay if x comma y belongs to 1 2 3 4 then which of the following are functions in the figures okay. So f1 is x comma y such that y equal to x plus 1 x comma y so this is our set x एक दो तीन चार ओके चार बनाना पड़ेगा हमको दिस 1 and 2 ठीक दिस इज योर x दिस इज योर y x में क्या है 1 2 3 4 y क्या है 1 2 3 and 4 y equal to x plus 1 y equal to x plus 1 x plus 1 y equal to x plus 1 y equal to x plus 1 4 plus 1 5 तो इधर नहीं है तो ये फंक्शन होगा क्या ये फंक्शन होबो कि कोन पे होबो होबो कि होबन देखिबा ना each elements of a set has an image in B तो 1 रो इमेज अछि 2 2 रो इमेज अछि 3 3 रो इमेज अछि 4 बट 4 रो इमेज बट 4 रो कोनोसी इमेज नहीं 4 रो कोनोसी इमेज नहीं तो दिस इज नॉट ए फंक्शन दिस इज नॉट ए फंक्शन second x plus y is greater than 4 x plus y this is a and this is b 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 and x plus y greater than 4 x plus sorry this is not a and b this is x and y x plus y 4 से ज्यादा होना चाहिए ठीक है 1 1 नहीं होगा 1 2 नहीं होगा 1 3 1 4 1 4 ग्रेटर देन 4 आ रहा है यस 2 plus 3 greater than 4 है yes 3 plus 2 greater than 4 आ रहा है yes 4 plus 1 greater than 4 आ रहा है 4 plus 2 greater than 1 आ रहा है सर ये भी तो आ रहा है सर 4 plus 3 ये भी तो 1 greater than 4 ये भी तो 4 ରୁ ଅଧିକ ଆସୁଛି 4 plus 4 ये भी तो 4 ରୁ ଅଧିକ ଆସୁଛି 3 plus 3 ये भी तो 4 ରୁ ଅଧିକ ଆସୁଛି 3 plus 4 ये भी 4 ରୁ ଅଧିକ ଆସୁଛି 2 plus 3 2 plus 4 ये भी 4 ରୁ ଅଧିକ ଆସୁଛି ଆମକୁ ଦରକାର କଣ ନା ଦିଟା ଯାକ ଏଲିମେଣ୍ଟ ମିଶିଲେ 4 ରୁ ଅଧିକ ଦରକାର ତ ଆମକୁ ତ ବହୁତ ସାରା ପେୟାର୍ସ ମିଳୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ମିଶିଲେ 4 ରୁ ଅଧିକ ମିଳୁଛନ୍ତି ନମ୍ବର तो अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन तो एटा को हम फंक्शन कहबे कि नहीं फर्स्ट कंडीशन थला फर्स्ट सेट रो एवरी एलिमेंट रो इमेज थिबा दरकार फर्स्ट सेट रो एवरी एलिमेंट रो इमेज थिबा दरकार 1 रो इमेज अछि 2 रो इमेज अछि 3 रो इमेज अछि एंड 4 रो भी इमेज अछि जेतु सबुतिकर इमेज अछि फर्स्ट कंडीशन को सैटिस्फाई कर but our second condition is not more than one element not more than one image एक रो अधिक इमेज नथिबो but 2 has more than one image 3 has more than one image 4 has more than one image so this is not a function this is not a function next 3 x this is y 1 2 3 4 1 2 3 y is less than x y is less than x y क्या होना चाहिए x से छोटा होना चाहिए मींस x is greater than y तो 1 किससे बड़ा है क्वेश्चन नहीं 2 1 से बड़ा है और किससे बड़ा 3 1 से बड़ा भी है 3 2 से भी बड़ा है 4 4 1 से भी बड़ा है 2 से भी ज्यादा है और 3 से भी ज्यादा ओके y is less than
एक्स आ गया। तो अभी देखो ये जो रिलेशन हमें भी डिफाइन करले, ये जो रिलेशन हमें डिफाइन करले, तो एटा हमरो फंक्शन होबा कि फर्स्ट कंडीशन एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट हैज एन इमेज इन सेकंड सेट, तो 1 रो इमेज एपटे नहीं, 1 रो इमेज नहीं, तो दिस इज नॉट ए फंक्शन, this is not a function. And according to our second condition, not more than one images, not more, but 3 has 2 images, 4 has 3 images, so this is also not a function. ठीक है, next 4, this is our f4, this is 1 2 3 and 4, this is 1 2 3 and 4. Okay, x plus y equal to 5, x plus y equal to, तो ये है x, ये है y, तो x plus y क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, तो 1 plus 4 5, 2 plus 3 5, 3 plus 2 5, 4 plus 1 5, तो ग्राफ बनी गला, डायग्राम रिप्रेजेंटेशन हे गला, तो एही रिलेशन ड को फंक्शन कहिबे कि नहीं ना, कंडीशन 1 फास्ट सेट रो प्रत्येक एलिमेंट रो इमेज थिबा दरकार, फास्ट सेट रो प्रत्येक एलिमेंट रो इमेज थिबा दरकार, अछि कि फर्स्ट कंडीशन सैटिस्फाई होउची। कंडीशन नंबर 2, नॉट मोर देन वन इमेज, गोटे रु अधिक इमेज नथिबो, ताले एठी केतरा इमेज, गोटे इमेज, 2 रो केतरा इमेज, गोटे, 3 रो केतरा इमेज, गोटे, 4 रो केतरा इमेज, गोटे, ताले एठी कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 दीटा जगह सैटिस्फाई करची, सो दिस इज ए फंक्शन। Okay, only option, only f4 is the function, but these 3 are not functions. Okay, next, a equal to -2 -1 0 1 2 and f such that a to z be given that f of x equal to x square minus 2x minus 3, find the range of f. What is range? Range means all the elements used in codomain. So what is the range? So a is your -2 -1 0 1 2, तो रेंज इज f a to z पे डिफाइन हो रहा है, तो f of -2, f of -1, f of 0, f of 1 and f of 2. What is f of -2? f of x is this, f of -2 मतलब -2 square -2 into -2 -3, तो ये क्या है 4 plus 4 minus 3 1/5. Next, -1 square minus 2 into -1 minus 3, 1 plus 2 minus 3, that is 0. f of 0, 0 square minus 2 into 0 minus 3, that is 0 minus 0 minus 3, that is minus 3. Next, f of 1, 1 square minus 2 into 1 minus 3, 1 minus 2 minus 3, that is minus 4. So what are the last is f of 2, f of 2 is 2 square minus 2 into 2 minus 3, that is 4 minus 4 minus 3, that is minus 3. So what are the range? What are the range? Now range is 5 0 3 minus 4 and minus 3. 5 0 3, sorry, minus 3 minus 4 and minus 3. Okay, pre-image of 6 minus 3 and 5, pre-image of 6 minus 3 and 5, that means pre-image मतलब ये है, pre-image means कौन माने आमे x जगह रे कोन वैल्यू पुट करबा, पुट कला पर मते केते मिलिबो ना 6 मिलियर अछि, x जगह रे कोन वैल्यू पुट करबा, पुट कले मते कोन मिलियर अछि ना -3, x जगह रे कोन वैल्यू पुट करिया, पुट कले मिलियर अछि केते ना 5, तो सी एलिमेंट्स जो एलिमेंट हम x जगह पुट कले से होछि कोन ना 6 रो प्री-इमेज, से -3 रो प्री-इमेज, से 5 रो प्री-इमेज, तो देखो कोन पुट करबा हमें
x square minus 2x minus 3 equal to 6. तो कौन आसी ना x square minus 2x minus 9 equal to 0. This is a quadratic equation. Then solve this. Then x equal to minus b plus or minus b square minus 4ac root over whole divided by 2. That is 2 plus or minus 40. 4 into 10, 2 root 10 divided by 2. That is 1 plus or minus root 10. So the pre-image of 6 is 1 plus root 10 and 1 minus root 10. Okay. Similarly, what is the pre-image of minus 3? Pre-image of, so x square minus 2x minus 3 equal to minus 3. That implies x square minus 2x minus से आ गया तो 0. That implies x whole into x minus 2 equal to 0. That implies x equal to 0 and 2. That means the pre-image of minus 3 is 0 and 2. f of x में जितने हमें 0 पुट करियो हमको -3 मिलियो. f of x जितने 2 पुट करियो हमको -3 मिलियो. ओके. नेक्स्ट कौन सा? pre-image of 5. Pre-image of 5. X square minus 2x minus 3 equal to 5. That implies x square minus 2x minus 8 equal to 0. Then this is a quadratic equation. Solve this. Minus b plus or minus b square minus 4ac root over whole divided by 2a. 2 plus or minus 32 plus 4 36 6 divided by 2. That means 4 and minus 2. The pre-image of 5 is 4 and pre-image of 5 is minus 2. Okay. If g of x equal to x square minus 10x minus 18, determine the image of minus 2 and the pre-image of 6. Image of minus 2 and pre-image of 6. What is image? Image of minus 2 is g of minus 2. G of minus 2. G of minus 2 means minus 2 square minus 10 into minus 2 minus 18. That is 4 plus 20 minus 18. 20 plus 4, 24 minus 18. So 24 minus 18 is 6. So image of minus 2 is 6. What is pre-image of 6? Pre-image of 6 is, that means क्या होना चाहिए ना, g of x equal to 6. g of x equal to क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए. What is g of x? g of x means x square minus 10x minus 18 equal to 6. Solve this. X square minus 10x minus 6. 18 plus 6, 18 minus 18 minus 6 equal to 24 equal to 0. This is a quadratic equation. Solve this quadratic equation. How to solve? The formula is minus b plus or minus b square minus 4ac root over whole divided by 2a. Whole divided by 2a. That implies 10 plus or minus 196 root over divided by 2. I think 13. 190, sorry, 196. 14 क्या? 14. Okay. 10 plus or minus 14 divided by 2. That is 10 plus 14, 24 by 2, 12, and 10 minus 14 minus 4 by 2 is minus 1. The pre-image of 6 is 12 and minus 2. Okay.
if a function f such that r to r be defined by f of x equal to this, then find f of 1, f of minus 1, f of 0 and f of 2. So first বুঝো এই যে f such that r to r তার মিনিং কোন? f such that r to r তার মিনিং কোন না f হচ্ছে ଗୋଟେ ফংশন, f হলা ফংশন ডিফাইন হଉଛି কোঠু কোঠু না r to r को ডিফাইন হଉଛି means real number set ରୁ real number set. This is the first set, this is your second set, ये हूँ तमर फंक्शन डिफाइन होची f. f is f such that r to f such that r to r. So what is f of 1? Na f of 1. So 1 means 1 is greater than 0. So this is your function. 4x plus 1 that equal to 4 into 1 plus 1 that equal to 5. What is f of minus 1? f of minus 1 means less than 0. f of minus 1 is less than 0. So 3x minus 2. 3x minus 2. So 3 into minus 1 minus 2. That is minus 3 minus 2 is minus 5. What is f of 0? f of 0. f of 0 means x equal to 0. That value is 1. So f of 0 is 1. What is f of 2? 2 means greater than 0. f of 2 means 4x plus 1. 4 into 2 plus 1. Right? These are the values of function f of 1, f of minus 1, f of 0 and f of 2. Next, if a function f such that r to r defined by f of x equal to 1 and minus 1, x belongs to q and x is not belongs to q, then minus 1. If x belongs to q, then value is 1. If not belongs to q, then value is minus 1. Okay. Now the question is find f of 1 by 2. f of 1 by 2. 1 by 2 belongs to q or not belongs to q? 1 by 2 belongs to q. So your value is 1. যেহেতু 1 by 2 টা q ভিতরে আছে তো ভ্যালু কেতে আসলা না 1. f of pi, q means rational number, f of pi means pi টা rational না irrational? না pi is a irrational number. যেহেতু pi টা irrational তাহলে ভ্যালু কেতে আসিব না ভ্যালু is -1. f of root 2, f of root 2 rational na irrational? root 2 is a irrational number, তাহলে ভ্যালু কেতে আসিব না -1. Okay. range of f means ଆମେ ଯେତେବେଳେ x ଜାଗାରେ ଭ୍ୟାଲୁ ପୁଟ୍ କଲା ପରେ ଆମକୁ କଣ ଭ୍ୟାଲୁ ମିଳିଲା ସି ହଉଛି ତମ ରେଞ୍ଜ. ତାହେଲେ ଭ୍ୟାଲୁ କଣ ମିଳିବ ଆଇଦର 1 ମିଳିବ ନହେଲେ -1 ମିଳିବ. ତମର ଯାହା ବି ଏଠି x ଜାଗାରେ ପୁଟ୍ କଲା ପରେ ଭ୍ୟାଲୁ ଆଇଦର 1 ମିଳିବ ନହେଲେ -1 ମିଳିବ. ତ your range is -1 or pre-image of 1 and -1. pre-image of 1 କେତେବେଳେ ମିଳିବ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ rational number ପୁଟ୍ କରିବି. -1 କେତେବେଳେ ମିଳିବ ଯେତେବେଳେ irrational number ପୁଟ୍ କରିବି. ତାହେଲେ pre-image of 1 is q. rational number pre-image of -1 is q dash, q complement irrational number. যদি q হেই নথিব rational number হেই নথিব, that is we cannot say like if the image of -1 is not rational. Okay. Next, the relation AF is defined by f of x equal to this and this, and the relation g is defined by the g of x equal to this, then show that f is a function and g is not a function. अच्छा हमको means हमको एटी देखेबार अछि जे f टा गोटे फंक्शन और g टा गोटे फंक्शन मीन्स हम केन जानबा ना फास्ट हम रिलेशन डिफाइन करियर अछि. जदि से रिलेशन टा दीटा कंडीशन को सैटिस्फाई करला,
जो से रिलेशन दीटा कंडीशन को सैटिस्फाई करे ताको हमें कोन कहउछि ना फंक्शन फर्स्ट कंडीशन कोन ना प्रत्येक फर्स्ट सेट रो प्रत्येक एलिमेंट रो इमेज थिबे फर्स्ट सेट रो प्रत्येक एलिमेंट रो इमेज थिबे सेकंड कंडीशन ना फर्स्ट सेट रो प्रत्येक एलिमेंट रो नॉट मोर देन वन इमेज नथिबे एक रु अधिक इमेज नथिबे दीज आर द टू कंडीशंस ताले देखो ताले फर्स्ट सेट रो एलिमेंट्स की आसीबे ना एफ एलिमेंट्स के ना आसला लेट 0 to 3 0 to 3 जेते मु x जगह 0 पुट करछि x स्क्वायर केते आसीबो ना दिस इज y x स्क्वायर आसीबो 0 x जगह 1 पुट करले x स्क्वायर केते आसीबो ना 1 x जगह 2 पुट करले x स्क्वायर आसीबो ना केते 4 x जगह 3 पुट करले x स्क्वायर केते आसीबो ना 9 ओके सेम x जगह ये तो फर्स्ट डिफरेंट है सेकंड टा ना जेते मु x जगह 3 पुट करछि दिस इज आल्सो 9 3,9 तो आमे सेट तो रिपीट करि परिबानी तो आमे दुई थर लिखि परिबा नै तो 3 जगह 4 पुट करले 4, 12 5 पुट करले 5, 15 6 पुट करले 6, 18 7 पुट करले 7, 21 8 पुट करले 8, 24 9 पुट करले 9, 27 10 पुट करले 10, 30 तो देखो ये गोटे फंक्शन है कि ना 0 to 10 सबु एलिमेंट रो सबु नंबर हमको कोन मिलला ना इमेज मिलला केतरा इमेज मिलची सबतिकर गोटे गोटे इमेज मिलची तो दिस इज ए फंक्शन सो दिस इज ए फंक्शन एबे आसीबो जी रे कोन आसीबो जी रे कोन आसीबो ना 8 जेते बेले मु कोन गली 0 पुट करली तो आसला केते ना 0, 0 1 पुट करले 1, 1 2 पुट करले 2, 4 3 पुट 2 पुट करले 2, 6 2 पुट करले 2, 2 जेतले पुट करछि 2, 4 2 जेतले पुट करछि 2, 6 दैट मींस 2 रो गोटे इमेज 4 2 रो गोटे इमेज 6 2 रो दुईटा इमेज आसला जेहेतु 2 रो एठी मोर देन 2 इमेजेस आसिला सो दिस इज नॉट ए फंक्शन कहना इमेज तो बाहरला अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1 बट अकॉर्डिंग टू आवर कंडीशन 2 नॉट मोर देन वन फंक्शन नॉट मोर देन वन इमेज एठी किंतु मोर देन वन इमेज आसिला सो दिस इज नॉट ए फंक्शन ओके if f such that r to r be defined by f of x equal to this then find f1 f inverse 17 and f inverse 13 okay f inverse मतलब if f of x equal to 17 then x equal to f inverse 17 that means तुमको x का वैल्यू चाहिए that means हमको कौन दरकार ना x र वैल्यू दरकार x जगह रे मु केते पुट करबी x जगह रे मु केते पुट करबी पर मते कोन मिडिया दरकार 17 मिडिया दरकार तो सेही x रे वैल्यूटा होय हमर f इनवर्स 17 ताले देखो ना f तो f of x equal to 17 f of x equal to x square plus 1 equal to 17 then x square equal to 16 x equal to plus or minus 1 अतः f inverse 17 is 4 and minus 4 भी होगा 4 भी होगा and minus 4 भी होगा what is f inverse 13 ना f of x equal to 13 f of x मतलब x square plus 1 equal to 13 x square equal to 12 x equal to root over of 12 means 2 root 3 plus or minus अतः f inverse 13 equal to 2 root 3 and minus 2 okay this is the inverse of a function inverse विषय हमें नेक्स्ट क्लास रे बोल से आउथरे बोल से पढ़िबा एबे फंक्शन विषय रे हमें क्लियर हेले एबे हमें फंक्शन विषय रे जानले तो इनवर्स ऑफ ए फंक्शन एंड रियल फंक्शन जोडे तांग डाउट्स ला डोमेन एंड रेंज ऑफ ए रियल फंक्शन से विषय रे हमें नेक्स्ट
क्लास रे बहुत भल से एंड इन डिटेल्स डेप्थ कांसेप्ट को जाई के हम पढ़ी ओके तो आज रो क्लास तो एती एज ए क्लास में एती थिला तो नेक्स्ट क्लास रे हमें फंक्शंस रो डोमेन रियल फंक्शन रो डोमेन रेंज हाउ टू फाइंड द डोमेन ऑफ ए फंक्शन हाउ टू फाइंड द रेंज ऑफ ए फंक्शन ओके से विषय रे पढ़िबा एंड आज जी पढ़ले फंक्शंस जानले रिलेशन जानले आम बर्तमान बेसिक्स चलছে बेसिक वंस तुम बेसिक क्लियर है ना देन आम वन टू टू क्लास बेसिक क्लियर करके देन एडवांस को जीवा जे लेवल क्वेश्चन ट्राई करिया सॉल्व करिया एडवांस लेवल क्वेश्चन ट्राई करिया सॉल्व करिया ओके फर्स्ट ट्राई कर तुम बेसिक क्लियर हो जाओ वंस तुम बेसिक क्लियर है देन मु जो जो ट्रिक्स शॉर्ट ट्रिक्स कहबी जो शॉर्ट ट्रिक यूज करी तुम क्वेश्चन को सॉल्व करिया इजी हबो सेटा तुम इजीली कैच कर परिबो ओके तो हार्डवर्क करो पढ़ापढ़ी करो बहुत कम टाइम समस्त पाखे ओके ट्राई कर फास्ट बेसिक क्लियर करो देन ट्रिक्स बुझ एंड एग्जाम लगी पड़ बोर्ड एग्जाम जो मैंने प्रिपेयर हो बोर्ड पे लगी जाओ एंड जो मैंने एंट्रेंस में भी प्रिपेयर हो एंट्रेंस में जोरदार लगी जाओ एबे ओके एबे टू स्टार्ट कर पढ़ापढ़ी तो ठीक अच्छे नेक्स्ट वीडियो रे पुणी देखा तो से पर्यंत बाय बाय बाय